Welcome back again to Sangem for the second semi-final between Mizuki Source of Energy, PIOC, and the Desert and More Avengers. Got the two captains with me, Felix Salimao and Dipraj Gaukar. Dipraj will spin the coin, tails is the call, and it has come down as heads. Dipraj, any specific reasons in batting first? No, wicket looks pretty good to bat on, so we would like to put good total on the board so that we can defend. What kind of total are you trying to put on this particular wicket? Anything above 180 would be good to defend over here. Any changes in your side for this second semi-final? Yeah, in place of Aditya, Rishikesh is playing. Okay. All the best, captain. Well, losing the toss and bowling first. That doesn't surprise much. Most of the times, as earlier in the day, we saw 236 was posted. How are your plans in bowling first against a quality side like Desert and More Avengers? Yeah, bowling first, we'll have to restrict them to a decent total. So whatever, keep a target in mind and execute our plans and try to restrict them to that target so that it can be easier for us in the second half of the game. Any changes in your side? Yeah, Harshad comes in place of Kshitij and Atharva misses this game and we've got Vivran Sharma coming. Okay, all the best, captain. So that's the news from the center. Desert and More Avengers have won the toss and they have decided to bat first.
Semi-final 2. Ravi Teja starting off and gets punched off the back foot for a single by Manthan Khudkar to get the mark with a single. His partner at the other end, Avishkar Mone, in some terrific form of late. Match between Desert and More Avengers deciding to bat first after winning the toss, and up against the PIOC. Mizuki PIOC. Porvorim Institute of Cricket. Ravi Teja from the gateway end. First 3 overs being the power play overs. Avishkar Mone on strike for the first time. Nicely played off the back foot again, and will pick up a single. Both these batsmen off and running with singles. Earlier today we saw in the first semi-final where Dampo won the toss, decided to bowl first, and had to chase a mammoth total of 237, which in the end looked very far from their reach. Excellent bowling by Parth, and also some fireworks at the start by Prathamesh Sarunke. Nicely played, cover driven, and that's for piercing the gap with perfection. Manthan Khudkar. Excellent timing. Fast outfield here in Sangem. You just clear the infield and you get full value for your shots. Linguistic cover drive for 4. Apologies, it's Aslan. It's Aslan who's batting at the moment. Advancing down the wicket. And that's gone. It's out of here. Half a dozen runs. Lil Man packs a punch. Straight down the ground and straight over the side screen for a maximum. Huge hit. Using the pace of the bowler, shimmy down the wicket 1 or 2 steps, and out it goes for a 6. And straight away, match official and the match referee getting together to get a ball. So the first free hit has been taken. First a boundary, then a maximum, and now free hit. Can't change the field as up in the air, chance taken, won't be given out as it's a free hit. Straight down the throat of Shubham. Just a single. Score moves to 12. In fact, 13 with that single. Nicely played, looking for a quick single. Avishkar Mone has been sent back. Dot delivery to end the over. After completion of 1, it's 13. 13 without loss after 1. Desert and More Avengers.
Fabid Ahmed from the Pepsi end. Spin being introduced. False start. 13 without loss. Doesn't more. Avengers winning the toss, deciding to bat first in this crucial semi-final. Priority Titans will be waiting for either of these two sides that will meet them. Nicely played. Straight to the man. Will be a dot delivery. Straight to covers. Shubham, the fielder. Nicely played. Oh, just wide the fielder. Has he found the gap? He has. Welcome runs as far as Desert and Mo Avengers are concerned. Arslan Khan again trying to up the ante. Just wide that fielder at short square leg and gets a boundary. Not trying to settle down the bowlers. First over 13 runs. Now a boundary of the second delivery of Ahmed. Nicely played, nicely worked around the corner. Will be a single. Officials in this particular game, Sandesh Gaonkar and Punya Palkar. Match referee Vivek Koramkar. Scoring has been handled by Vivek Bhai. Yours truly, Sham Kalangutka in the commentary box. And also will be joined by the legendary Bunty sir. Was singing earlier, don't know where he vanished. Nicely played again by Avishkar Mone. Avishkar Mone realizing that his partner has been striking the ball cleanly. Why don't I just bite my time in the middle, field for the ball, I'll just get the deliveries in and then maybe try and accelerate. So far Arslan is doing a pretty fine job. Slight change in field. Man at square leg has been just moved a touch wider and shot. This time in the air and gone. One shot too many. Again, just that field placement that worked for them. Man from short square leg was moved towards short fine. And the man at the boundary rope was just moved a bit towards the right hand side. Well, trying to go for the big hit, trying to utilize that gap between those two men. And has paid rich dividends for Fabid Ahmed. He has picked up Arslan Khan. It's 19 for 1. New man in Rishikesh. Nicely played. And will be a single. Gets off the mark with that single. Does Rishikesh Ugare. 2 overs done and dusted. It's 20 for 1. Desert and Mo Avengers. 20 for 1 after 2.
Change in bowling. It will be the skipper, Felix Salimao, from the gateway end. Just wants to get his field right. All these live images from the Goa live cast. Premier partners of the SANGUEM cricketers in hosting the GOICHI League. Nicely played, driven and gone. Straight away the skipper gets busy with that wicket. Tej Rana at covers taking that catch. And Rishikesh Ugare departs. Foolish and Len delivery. An easy catch taken by Tej Rana. It's 20 for 2. Desert and Mo Avengers find themselves in some sort of trouble. New man in Ayush Vedlekar. Him along with Avishkar Mone needs to get a partnership going. 20 for 2. And Desert and Mo Avengers looking in some sort of bother at the moment. Decision of batting first might just backfire on them with the kind of wickets that they have given to the opposition side, PIOC. Good delivery. Oh, what happened there? Replay will certainly tell us exactly. Halfway down the pitch. Chance of a run out. Not quite. Single taken. Avishkar Mone just telling his partner, calm yourself down. Hold your horses. What's the rush? Gets away with one. Gets off the mark with that single. Does Ayush. So second free hit has been taken. And Avishkar Mone will be on strike. Slow delivery down the ground. Back past the bowler, and that will... Is it been stopped inside? Very well done. Will be a couple of runs to Avishkar Mone. 23 for 2. After those couple of runs down the ground, utilizing that second free hit in this innings. And Desert and Mo Avengers. This one trying to just play it between the two men. Covers and the point, but unsuccessful. Coming off a niggle, coming off some rest has been Felix Salimao. And Felix Salimao has been delivering the same kind of pace that he used to generate earlier. Very steady, very nippy. This one flown away.
Swing hard and gets a boundary. Again, quick delivery. Charging in was Felix. And threw the kitchen sink at it. Did Avishkar Mone. Score moves on to 27. This is the captain suggesting Dipraj Gaonkar. Maybe over 180, 190 would be a good total on this surface, especially with the kind of bowling depth they have got. He himself can be used as an option, and also many others. Good delivery. Is he going to come back for the second? Yes, he will. Couple of runs to end the over after completion of 3. It's 29 for 2. 29 for 2 after 3 overs. Desert and More Avengers. Here's a quick look at all the sponsors for this GOICHI League 2025. Organized by the SANGUEM cricketers, powered by Shri Subhash Desai, Minister for Social Welfare. Desert and More Priority Constructions, Shri Nilesh Kabral, MLA Kursuram, Shri Rajesh Desai, MLA Kumbarzua, HDFC Bank, Deepak, aka Amarnath Desai, Santosh Desai, Prasad Naik, aka Pochu, Abhijit Desai, Goa Sponge and Power Limited, JSW Cement, Dijay Farms, Shraddha Ispat Private Limited, Keros Cruise, Ashish Karmalkar, Meher Khan, Rizma Group, Raviraja Upadhyay, Sudesh Salelkar, Chamek Projects Private Limited. A big thank you to Goa Cricket Association and all the office bearers for making this event possible. Fabid will continue. Meanwhile, false start. Best batsman to be awarded, and it has been sponsored by Shri Dattadas Bise. Best batsman by Shri Lakshman, aka Pramod Naik. Good delivery, played with soft hands, looking for a quick single. And the big man had some dancing shoes on to get to the other end. Safely done though. Gets a single, score moves to 30. Man of the final, sponsored by Shri Gurunath Naik, proprietor, Dago Enterprises. Man of the series by Shri Raghunath Moraskar, proprietor, Madira Center. Winners trophy by Advocate Tushar Karmalkar, in loving memory of his father, late Vinayak D.S. Karmalkar. Runners-up trophy by Shri Ankush Gauss, in loving memory of his father, late Prakash Gauss. This time hiked away onto the onside, will just be one. Event like this, such a prestigious event like this, is not possible without the sponsors' helps, the assistant financial aid, goodwill, the reputation that they bring to the total has completely changed the dynamics of many sports. Nicely played. And we'll get a single. Doing it easily right now, these two. Nothing much to rush with, as they have got the runs in the previous over. And now just trying to play out this particular over. Not taking any risk against Fabid, as he has picked up that wicket of Aslan. Down the ground, straight to the fielder at long on, will just be one. Good delivery, again depth, and again taken a single. 5 deliveries, 5 singles that have been taken by these two, Avishkar Mone and Ayush Vellekar. Both looking very busy, and busy should they be,
The Modi wastage of deliveries will create pressure on the following batsman that will come in next. Down the wicket and over the top for one bounce over the ropes for 4. As you can see on the replay, short delivery banged in and safe shot to hit over the bowler's head. In fact, it's gone all the way, half a dozen runs maximum. Score moves to 40. 40 for 2 after 4 overs. Desert and Mo Avengers. Change in bowling from the gateway end. It will be Yogesh Kauthankar. So spin being introduced from both the ends. This time Yogesh with his leg break. Good delivery rightly behind it. Dot delivery. Presenting full face of the blade is Ayush Vedlekar. Oh, that one just turned a bit. Line was perfect. Enticing the batsman to go after the drive, or maybe just to push it forward. First one pitched well within the stump line. Next one just ahead. Again, this time cut away behind point. Will be a single. Score moves to 41. Talking about coming here in Sangem for this prestigious event of the Sangem Cricketers GOICHI League 2025. Always gives me pleasure. Travelling in from far, but still the standard that the Sangem Cricketers have set are top notch, are world class. Up and over. One bounce over the ropes. Over extra cover for 4. He is not showing any respite, making his intentions pretty clear. No matter you give me a faster man or a spinner, I will treat him accordingly. And that's been hammered over covers for 4. .236, then 170 in the second innings. Now 45 in just 5th over. And a scorer has just tried to loosen his hands. Good delivery, played it with soft hands. Looking for a quick single and will eventually make it. Single taken, score moves to 46. After getting that boundary, get a single, get a move on. And that's what is needed. Need to rotate the strike. Can't just afford to go bang bang every delivery. Need to just maneuver the ball around. Need to play the field that has been set for you. So far, Yogesh Kauthankar in his first over has given 6 runs. Let's see if he can finish well up against Ayush now. Short delivery, cut away. Straight to the fielder at back to the point. Dot delivery to end the over. After completion of 5, it's 46 for 2. And Desert and Mo Avengers. Will be change in voice at the start of the 6th over. It will be Bunty Vedlekar sir in the commentary box. यस धन्यवाद श्याम कलंगुटकर जी, जो कि 5 ओवर में आपको उन्होंने अंग्रेजी में आंखों देखा हल सुनाया।
आयुष वेर्लेकर और आविष्कार मोने, ये दो बल्लेबाज क्रीज पर तैनात हैं। आविष्कार मोने 12 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन पर खेल रहे हैं और आयुष वेर्लेकर 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स और PIOC के बीच ये दूसरा सेमीफाइनल मैच। आविष्कार मोने सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद यहां पे कलाई के जरिए मोड़ दिया 1 रन के लिए। इस रन के जरिए स्कोर में इजाफा हो चुका है 47 फॉर 2। 9.10 जो रन औसत है वो चल रहा है और इसी हिसाब से जाते हैं तो 20 ओवर तक प्रोजेक्टेड स्कोर है 182। देखते हैं वहां तक जा पाते या नहीं। ये गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन फील्डर गेंद तक पहुंच नहीं पाए, काफी दूर थी उनसे। तब तक और 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर 48 रन हो चुके हैं। ये साझेदारी जैसे जैसे पनपती रहेगी वैसे वैसे एक बड़ा लक्ष्य जो है वो हासिल करने की कोशिश रहेगी। ये गेंद उठाने की कोशिश और गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया। गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। 4 रन 4 रन्स, मौके पे चौका। शॉर्ट पिच गेंद थी, बिल्कुल अपने आप घूमे, गेंद को भी घुमाया 4 रन के लिए। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी बीच शिवम सिंह पेप्सियन से अगली गेंद लेके तैयारी है। गेंद ये पटकी हुई गेंद थी। शॉर्ट थर्ड मैन वहां पे तैनात थे, थोड़ी सी उनसे आगे ये गेंद गिरी और 1 रन का इजाफा। बिल्कुल अब धीरे धीरे अपने बाहें खोल रहे हैं, बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। ये गेंद शिवम सिंह की दाहिने हाथ से ओवर द विकेट हल्के हाथ से प्लेस करते हुए और 1 रन ले लिया है। इस रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच शिवम सिंह पेप्सियन से प्लेस किया है और 1 रन स्कोर 55 फॉर 2 आफ्टर 6th ओवर। 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अरसलन खान 17 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए, जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, उसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल। ऋषिकेश जिन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया, 2 गेंदों का सामना किया। आयुष और आविष्कार अब क्रीज पर मौजूद हैं। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन। योगेश कौटनकर बढ़िया शुरुआत, 2 गेंद निकाले हैं योगेश कौटनकर ने, कोई मौका नहीं दिया
और बल्लेबाज ने भी इस गेंद पर छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन 56 फॉर 2। ये गेंद आड़े बैट से घुटना टेक शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का मिलाप नहीं पाया, गेंद को गैदर किया, कीपर ने वापस कर दिया बॉलर के लिए। इस बार गति में परिवर्तन, पहले से भाप लिया था, बिल्कुल करारा हवाई फायर करते हुए 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। आविष्कार मोने बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, धुआंधार, देखते ही देखते 19 गेंदों का सामना करते हुए व्यक्तिगत 36 रन पर जा पहुंचे हैं आविष्कार मोने। बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, जहां पर 1-2 मिलते हैं वहां पे 1-2 लेते हैं, जहां पे मौका मिलता है चौका लेते हैं, और जहां पे हवाई यात्रा पे गेंद को भेजना तब बिल्कुल भेज देते हैं। इसी बीच गेंद कंपाउंड के बाहर जा चुकी थी। इसी बीच फिर एक बार गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। स्कोर 62 फॉर 2, 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि जो गेंद बाहर गई थी वापस मैदान पर आ चुकी हैं। यहाँ पे कट करने की कोशिश की, नाकामयाब रहे। फिर एक बार डॉट गेंद निकाली, योगेश कौटनकर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बांध के रखने में कामयाब हो चुके हैं। ये उठा दिया है, देखना होगा क्या ये हवाई फायर होता है या नहीं। जी हाँ, प्रयास तो बढ़िया था, पूरी तरह से अपने आप को हवा में झोंक दिया, गेंद तक पहुंच पाए थे लेकिन बैलेंस खोने के बावजूद वो बाहर गेंद गिर चुके हैं बाउंड्री लाइन के बाहर। तो ये 6 रनों का इशारा आ चुका है। 68 पॉइंट की दिशा में खेल दिया, क्या गैप मिल जाएगा, नहीं, वहां पे पीछे बैकअप था। और 1 रन। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के समाप्ति के बाद 69 फॉर 2। आयुष वेल्लेकर और आविष्कार मोने, हालांकि आयुष वेल्लेकर बिल्कुल अपने साथी आविष्कार मोने को स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। आविष्कार मोने देखते ही देखते 43 रन पर जा पहुंचे हैं। उड़े उड़े इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज फेलिक्स सलीमो। ये बिल्कुल गेंद पर कंट्रोल उनका चला गया था, फिर भी 1 रन, शॉर्ट पिच गेंद, मौका था बल्लेबाज के पास, उस मौके को गंवाया। आयुष वेल्लेकर
और आविष्कार मोने। पॉइंट की दिशा में खेल दिया और एक रन खाते में जुड़ता हुआ 71 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 8वीं ओवर जारी है। 8th ओवर इन प्रोग्रेस। डेजर्ट एंड मोर अवेंजर्स और PIOC के बीच ये दूसरा सेमीफाइनल मैच। ये बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद थी, खेल दिया है चौके के लिए। गेंद की गति का फायदा उठाया, गेंद बिल्कुल दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। 75। इसी बीच फिर एक बार आविष्कार मोने सामना करने के लिए तैयार। ये कला के जरिए मोड़ दिया और आविष्कार मोने का व्यक्तिगत स्कोर अब 49। 1 रन दूर है आविष्कार मोने, हालांकि अब नॉन स्ट्राइक रन पर जा चुके हैं। आयुष वेलेकर 8 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। फेलिक्स सालेमाओ पेप्सियन से। यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश की थी आयुष वेलेकर ने, लेकिन अपने फॉलो थ्रो में फेलिक्स आलेमाओ ने इस गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। 76 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 8वीं ओवर जारी है। ये बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं। इस गेंद पर बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए ये यॉर्कर गेंद थी और डॉट गेंद निकाली है। ओवर की समाप्ति 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 76 रन, 76 फॉर 2। अब देखना है आविष्कार मोने अपने हाफ सेंचुरी पूरी कर पाते या नहीं। 49 यानी 49 पर खेल रहे हैं, 25 गेंदों का सामना किया। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन। जो व्यूवर्स हैं उनके लिए जानकारी, कल सुबह मैच नहीं होगा, बिल्कुल 1:30 बजे फाइनल मैच शुरू होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कल सुबह मॉर्निंग सेशन में कोई मैच नहीं होगा। फाइनल मैच ठीक 1:30 बजे इसी मैदान पर शुरू होने जा रहा है, जो कि दोपहर के 1:30 बजे कल यानी संडे। इसी बीच गेंद हल्के हाथ से प्लेस कर दिया और 1 रन का इजाफा होता हुआ। और ये 50 रनों की पारी हो चुके हैं। आविष्कार मोने हाफ सेंचुरी बना चुके। इसी बीच गेंद खेल दिया है चौके के लिए, 4 रन्स। इस आयुष वेलेकर और आविष्कार मोने।
इसी बीच ये गेंद वाइड बॉल का इशारा, तो अतिरिक्त रन यहां पे मिल चुका है। 9th ओवर इन प्रोग्रेस। ये गेंद यहां पे हल्के से प्लेस करते हुए एक रन ले लिया है, सीधा थ्रो लग चुका है और ये टीवी एम्पायर की ओर इशारा करते हुए एम्पायर तो देखते हैं। हालांकि दिल की धड़कनें जो है बल्लेबाज की बढ़ी हुई कि क्या मैं सेफ हूं या नहीं हूं। फिलहाल जांच चल रही है, थर्ड एम्पायर यानी कि टीवी एम्पायर देख रहे हैं कि क्या ये आउट है या नहीं। थोड़ी देर के लिए रुकावट और रुकावट के लिए हमें खेद है। स्कोर फिलहाल तो इसी बीच खेल फिर से जारी होने जा रहा है। (83 for 2) ये कवर की दिशा में खेल दिया है, बेहतरीन कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, ये मिलेगा चौका, 4 रन्स। इस चौके के जरिए स्कोर 87 for 2। बिल्कुल हमलावर हो चुके हैं, आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए आविष्कार मोने अपनी बाहें खोल चुके हैं, इरादे उनके बुलंद हो चुके हैं। इस गेंद को जांचा परखा और जाने दिया कीपर के दस्तन में, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा और एक अतिरिक्त रन और स्कोर है 88 for 2। पहले ऑफ स्टंप के बाहर, अब लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल 89। इसी बीच विवरांत की गेंद गए थर्ड मैन की दिशा में, वहां पे क्या देखना होगा, चौका ही मिलेगा, 4 रन्स। विवरांत जो कि गेंदबाजी कर रहे थे, गेंद थर्ड मैन की दिशा और चौका, इस चौके के जरिए स्कोर 93, 9th ओवर इन प्रोग्रेस। और ये फ्री हिट का इशारा, आविष्कार मोने। ये गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन की ओर जा रहे थे, लेकिन फील्डर को पाया वहां पे और सिर्फ 1 रन। तो इस रन के जरिए जो ओवर है 9 ओवर हो चुके हैं, 94 for 2। आयुष वेर्लेकर 13 पर खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी छोर आविष्कार मोने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 59 रन पर जा पहुंचे, सिर्फ 29 गेंदों का सामना किया। आयुष वेर्लेकर बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रोटेट करे, ज्यादातर स्ट्राइक आविष्कार को दे रहे हैं। इसी बीच नए गेंदबाज जो कि पेप्सी एंड से 10वीं ओवर का आगाज करने जा रहे हैं।
यहाँ पे 1 रन तो यकीनन मिलेगा। 95 for 2। इसी बीच अगली गेंद, ये गेंद यहाँ पे अपील तो जोरदार हो चुके हैं। वाइड बॉल का इशारा, दबाव बनाना चाहते हैं लेकिन अंपायर अपने निर्णय पर डटे रहे। वाइड बॉल का इशारा उन्होंने किया है। बिल्कुल स्कोर है जो शिवम सिंह की अगेन हल्के हाथ से प्लेस करते हैं और 1 रन जोड़ लिया है। आयुष वेर्लेकर और आविष्कार मोने, बिल्कुल ये साझेदारी जो है बढ़िया तरीके से पनपती हुई। ये साझेदारी 77 रनों की हो चुकी है। 43 गेंदों का सामना किया। और इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल तो बिल्कुल बेहतरीन साझेदारी करते हुए तीसरे विकेट के लिए। फिलहाल अब तक 78 रनों की साझेदारी हो चुकी है आयुष वेलेकर और आविष्कार मोने के बीच। शिवम सिंह अपने बॉलिंग मार्क पर, जो कि पेप्सी एंड से। ये कलाई का उपयोग बेहतरीन, ये चौका मिलेगा। 4 रन्स स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद की गति का फायदा उठाया, बल्ले से सिर्फ कलाई के जरिए दिशा दे दी और गेंद बिल्कुल गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। स्कोर जा पहुंचा 102 for 2। तो बिल्कुल 10.55 इस रन औसत से रन आ रहे हैं। हालांकि पहले 2 विकेट बहुत ही जल्दी गिर चुके थे, लेकिन अब तीसरे विकेट के साझेदारी ने बिल्कुल संभाला है। यहाँ पे और 1 रन, इस रन को जोड़ते हुए स्कोर 103। 103 रन 2 विकेट के नुकसान पर शिवम सिंह की गेंदबाजी जारी है, जो कि पेप्सी एंड से। या फिर एक बार कलाई का उपयोग और 1 रन। स्कोर 104। 104 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के समाप्ति के बाद। अब जैसे गेंदबाजी में बदलाव, वैसे ही कमेंटेटर बॉक्स में बदलाव। हमारे मेरे साथी कमेंटेटर जो कि अंग्रेजी में कमेंट्री करेंगे, श्याम कलंगुटका।
Thank you, Bunty Bhai. 10 overs done and dusted. 104 for 2. And signal comes from the umpire for the golden over. Whatever you score, it will be doubled. And Ravi Teja has straight away been posted down to the extra cover boundary by Avishkar Mone. Telukupalli Ravi Teja started the over from this particular end. Previously, 13 runs were scored of his solitary over that he bowled. Now coming in this golden over. Nicely played with soft hands by Ayush. Will just be a single. So far this partnership that what we have talked about is growing and growing very beneficially as far as the Desert and Mo Avengers are concerned. These two men in the middle. One with attack, other one with defense. Both are trying to secure a big total on the scorecard. No matter whatever kind of bowling that has been, whatever questions that are being asked to them, they have answered them with flying colours. Just a dab. And Avishkar Mone can do that as well. It's not just about the power, it's about the delicacy as well. That's been nicely played. Knew exactly that the fielder at short fine was inside the 30-yard ring. Hit it just away from his reach and gets a boundary. Score moves to 110. Looking solid as ever. Needs to continue. This time blasted it down the ground and will find man for just a single. Fabulous organizing this by the Sangem cricketers here in the Sangem GCA ground. Goichi League 2025. Superb bit of atmosphere. Goichi League powered by Shri Subhash Fardesai, Minister for Social Welfare, and all the Sangam cricketers under the guidance of Advocate Tushar Kalmalkar. Everybody contributing towards a very big cause. Nicely played with soft hands. A single. I would like to bring to notice is if the GC office bearers and rest of the cricket fraternity lovers are watching this, listening to this, then definitely should organize such kind of tournaments, just like how Sangam cricketers are doing, promoting the younger generation as well as the cricket that has been played in Goa, getting the help of the other overseas, in fact the outstation players, gelling with the locals and performing really well in the competition. That's big. And it's out of here. Certainly it has gone way out of the ground. Avishkar Mone is batting on some other planet right now. He's gone on to 74. It's 118 for 2. 11 overs gone. And that one was ousted out of the ground. Superb bit of batting. 118 for 2 after 11. As I was talking about the invasion of this kind of tournaments in Goa, definitely from the north, from the middle part of Goa as well, should try and
organize such kind of tournaments so that more promotion of the leather ball cricket and more exposure can be given to the Goan players. As we can see, a lot of tennis cricket being played. Nothing harm in playing tennis cricket, but still, the main motive for every Goan right now is to get one into the bigger stage. Previously, we had Swapnil Snodkar, Shadab Jakati, Suyash Prabhudesai in the ranks of IPL teams. Now we don't have anyone. Just that need to manufacture some to perform at the higher level. Leg spinner in operation, straight to the fielder at covers. Yogesh Kauthankar continuing from the Pepsi end. Reverse sweep missed. Maybe playing to a bit earlier. And Yogesh Kauthankar very smart in just trying to slow it down. Leg spinners are trusted with some good wicket taking background. They might go for runs, but they'll take wickets. It's the myth behind them. But so far, these two have played really well, under caution and under some aggression as well. Outside edge and straight to the man at short third. Harshad Gadekar down there on the bounce to him just for a single. This will be interesting as how Avishkar Mone goes about to the leg spinner. Does he try and play out this over, or does he go? Does he fancy his chances against him? Short delivery, played up and over. And that's gone for half a dozen. He's eyeing 100. 80. He's batting on right now of 37. 139 for 2. Off the back foot, and that's very powerful. No chance for the fielder who was patrolling at that boundary. Score moves to 139. Nicely played through the covers. Has he pierced the gap? No. Fielders in tandem done exceedingly well. 2 more runs to the total. Score moves to 141. Again, in the morning session, we saw in that semi-final one, 236 got posted by Priority Titans. And now the Desert and More Avengers certainly eyeing to match that. This time through the covers, in the gap, and that's excellent batting. 2 men were back on the boundary rope, and both were completely outfoxed with that timing and finesse of Avishkar Mone. Batting like a dream at the moment. Not much of gap between them, but he has managed to find it. 12 overs done, 145 for 2. And Desert and More Avengers.
Shivam Singh has been given the ball from the gateway end. Down the leg side and help yourself. Bonus runs. Loose delivery and that's 4. Score moves to 149. And these two are putting on a terrific partnership. 20 for 2 it was. Needed a partnership and boy oh boy they have got a tremendous bit of a connection between them and this partnership is growing more and more. 129 that has gone to team total of 149. Ayush Vellekar also getting into the act. Nicely played, quick run, chance, not quite. Will be just a single. And with that 150 up for Desert and More Avengers. Just in the 13th over. Was close but not that effect on that ball hitting the stumps. It didn't. 150 for 2. 13th over in progress. Avishkar Mone on strike. Will he be lining Shivam Singh? Will he be charging at him? Or is he going to target that mid-wicket fence? Pulled away in the air. Oh, just falling short of the fielder. Maybe would have come in to take a half chance, as that man is completely making a mockery of this bowling right now, Avishkar Mone. Feeling a bit tired, feeling a bit exhausted. Scorching heat in the middle. Nicely played. Will just be one. We are sweating out in the commentary box. Why wouldn't he be in the middle? Temperature rising. Month of April, May. Always too much of humidity in Goa. Short delivery down the ground. Will just be one. That's a wide, extras. Mizuki, source of energy for Urim. Institute of Cricket against the Desert and More Avengers. Short delivery, hiked away and in the gap. That will be 4. Again, good timing and timely boundary. Started off with a boundary and now ended with a boundary as well. 158 for 2 after 13 overs. Desert and More Avengers.
Change in bowling. It will be Fabid Ahmed in the bowling attack. 158 for 2. Just after that, halt of play, Avishkar Mone on 88, Ayush Vellekar on 32. Slight change in field. Man from covers has been sent to Beckett point. And again, just trying to move it. Maybe playing with the minds of the batsmen. Cat and mouse between the two, the bowler and the batsman. Oh, leading edge. That would have gone into the hands, but not to be. Very lucky. And such a beautiful innings this has been, Avishkar Mone's. He needs some luck as well. Pleasing to the eyes, every stroke that he has played today. Again, nicely played down the ground and will just be a single. That's big. And it's out of here. Again, quick delivery and pounced on it. Getting into some terrific positions. Here's Avishkar Mone to hit it down the ground for a 6. Good delivery. In fact, that's wide. It's wide. Nicely played. And will get a single. Not just he's trying to hit every delivery out of the park. He has looked busy as well. Trying to maneuver the ball around. Played strokes all around the park. Through the carpet, over the carpet as well. 168 for 2 currently. The Desert and More Avengers. Appealing, not out, says the umpire. Might have just been missing. Nicely played off his legs. In fact, worked off his legs. 1 to end the over. After completion of 14, it's 169 for 2. 169 for 2 after completion of 14 overs. Desert and More Avengers deciding to bat first after they chose it correctly at the toss. Quick look at all the sponsors for this tournament of this GOICHI League 2025. Organized by the SANGUEM Cricketers, powered by Shri Subhash Fardesai, Minister for Social Welfare. Desert and More Priority Constructions, Nilesh Cabral, MLA Kursuram, Rajesh Fardesai, MLA Kumbarzwa, HDFC Bank. Deepak, aka Amarnath Desai, Santosh Fardesai, Prasad Naik, aka Pochu, Abhijit Desai, Goa Sponge and Power Limited, JSW Cement, DJ Farms, Shraddha Iswat Private Limited, Kherez Cruise, Hashish Karmalkar, Meher Khan, Rizma Group, Raviraja Upadhyay, Sudesh Salilkar, Chimek Projects Private Limited,
is Felix. And that will be wide. Score moves to 170, being the 15th over in progress. Up and over the infield, realizing that fielder was inside the 30-yard ring, and that's smart batting. Looking to stop a boundary. Has he done well, or will it be just 2 runs? Seems to be fine. Back past the bowler, and in the follow through they get a single. $173 for 2. 15th over in progress. 5 more overs to go after this. Avishkar Mone and his partner Ayush Lekar will be eyeing to get in excess of 230-40 for this semi-final 2. So 4th free hit has been taken by Avishkar Mone, maybe to try and complete his 100. Swing missed. Again trying to go over the top. Will be a single. On to 97. Still 3 deliveries remaining in this over. 174 for 2. Will be exceedingly happy, the skipper of Desert and More Avengers, with this kind of score. Nicely played. Will find the man and will get only 1. $175 for 2. Felix bowling his 3rd over. Has been pretty tidy. Got the wicket. 2 more deliveries remaining in this 15th over. That's gone through, and that will be it. Magnificent 100 from Avishkar Mone. Take a bow. What an innings that is. Coming off just 46 deliveries. Powered with 6 maximums. Well, the dressing room and everybody here in Sangem, not just Sangem, everybody in Goa will applaud to that innings. What innings that is. Under pressure. Wickets lost early, 2 wickets gone down, and then he stood his ground for Desert and More Avengers. 9 boundaries, 6 maximums. Striking at 219, 101 of just 46 deliveries. No respite being shown to any bowler that he faced, and would like to continue. His skipper, his teammates would like him to power more, as it's 179 for 2. Will be definitely trying to get at least 230, 240 on this belter of a wicket. There you go. Well,
Just get the measuring tape on. It's way out of here. Another 6. Another maximum. Score moves to 185 for 2 after 15 overs. That being the 7th that he has hit. And the official and the match referee will definitely get some new balls. 185 for 2 after 15 overs. Coming back to that list of sponsors. Best batsman sponsored by Dattadas Vishay. Best bowler by Lakshman aka Pramod Naik. Man of the final, Gurunath Naik, proprietor, Dego Enterprises. Man of the series by Shri Raghunath Moraskar, proprietor, Madira Center. Winners trophy by Advocate Tushar Karmalkar in loving memory of his father late Vinayak D.S. Karmalkar. Runners-up trophy by Ankush Gawas in loving memory of his father late Prakash Gawas. A big thank you to GCA as well, Goa Cricket Association, and the office bearers. GOICHI League 2025 powered by Shri Subhash Fardesai, Minister for Social Welfare. And the big thank you as well to SANGUEM cricketers for hosting this prestigious event. Semi-final 2, Desert and More Avengers, 185 for 2 after 15 overs. 5 more overs remaining against the PIOS. It will be change in voice. It will be the legendary Bunty Vadelkar in the commentary box. हेलो, धन्यवाद श्याम कलंगुटकर। इसी बीच आविष्कार मोने ने बेहतरीन पारी खेली, 107 रन बनाए, सिर्फ 47 गेंदों का सामना किया, हर गेंदबाज के पीछे पड़े, बिल्कुल लाजवाब पारी खेलते हुए आविष्कार मोने उनका साथ अच्छी तरह से निभाते हुए आयुष वेल्लेकर 33 गेंदों का सामना किया, फिलहाल 38 रन बनाकर खेल रहे हैं। बिल्कुल दुनिया बढ़िया साझेदारी दोनों की, और इस साझेदारी के बदौलत 185 फॉर 2 15 ओवर के समाप्ति के बाद, हालांकि 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे, लेकिन ये साझेदारी जो है वो बिल्कुल कामयाब होती हुई। ये गेंद उठा दिया है, देखना होगा वहां पे क्या लपक पाएंगे। बेहतरीन कैच, बिल्कुल लाजवाब, लाजवाब, बिल्कुल अपने आप को आगे झोंक दिया। बेहतरीन कैच ऑफ द डे माना जा सकता है। नजरें टिकाए रखे, आखिरी वक्त तक उन्होंने नजर गेंद पर रखी और बेहतरीन कैच लपक लिया। काफी देर के बाद ये साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं, हालांकि बिल्कुल जरूरत थी, जो कि PIOC के लिए। तो बेहतरीन पारी जो थी, इसी बीच नए बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज की ओर बढ़ते हुए, हालांकि एक क्षण से आविष्कार मोने डटे हुए हैं। आविष्कार मोने जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, लाजवाब पारी खेल रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद, यहाँ पे हल्के हाथ से प्लेस करते हुए 1 रन ले लिया है।
नए बल्लेबाज चिराग चारी गए हैं, जो कि आविष्कार मोने का साथ देने के लिए। इसी बीच अगेन बिल्कुल फील्डर को पाया, लगातार 2 विकेटें गिर चुके हैं। बढ़िया खेल रहे थे आविष्कार मोने, लेकिन जब से आयुष वे लेकर गए तो आविष्कार मोने भी बिल्कुल हवाई फायर करना चाहते थे, सही टाइमिंग नहीं कर पाए और वापस डगआउट्स की ओर। इसी बीच नए बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज की ओर बढ़ते हुए तो जो 2 बल्लेबाज जिन्होंने बेहतरीन साझेदारी की वो आविष्कार मोने और चिराग, हालांकि आयुष वेर्लेकर इनको वापस डगआउट में भेज दिया है। ये दोनों सफलताएं योगेश कौटनकर को गई हैं। यहाँ पे उठा दिया, देखना होगा वहाँ पे फील्डर क्या रोक पाएंगे। जी हाँ, बढ़िया फील्डिंग, वहाँ पे 1 ही रन मिलेगा। अपने टीम के लिए यकीनन 3 रन बचा लिए हैं। उस गेंद को रोकने के लिए काफ़ी लंबा फासला तय करना पड़ा। कवर की दिशा में खेल दिया है, बहुत ही बढ़िया, फील्डर को बीट किया और गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। चिराग जानी और दीपराज गांवकर, ये 2 बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। 191 for 4। इस बार बिल्कुल फील्डर को पाया, थोड़ी सी मिस फील्डिंग का फायदा उठाया, 1 रन चुरा लिया। इस रन के जरिए स्कोर 192 for 4। दीपराज गांवकर एक जाने माने ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी भी करते हैं। चिराग जानी उनके साथ हैं और योगेश कौटनकर 4 ओवर 40 रन, 2 विकेट उनको मिल चुकी हैं। दोनों ही अहम विकेट जो कि बिल्कुल साझेदारी बन रही थी वो तोड़ दी हैं योगेश कौटनकर ने। इसी बीच गेंद यहाँ पे और 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन बढ़िया लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये गेंद उठा दिया है, देखना होगा वहां पे फील्डर तैयार है और ये आउट। तो विकेट पे विकेट गिरते जा रहे हैं। हालांकि 2 विकेट के बाद एक बढ़िया साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन और 1 विकेट पतन हो चुका है। कुल मिला के साझेदारी के बाद 3 विकेट गिर गए हैं। तो बढ़िया वापसी कर चुके हैं PIOC। इसी बीच
193 for 5. फेलिक्स आलेमाओ को ये सफलता, दूसरी सफलता उनके खाते में। फेलिक्स आलेमाओ अपने निजी चौथी ओवर में चल रहे हैं। 33 रन दिए, 2 शिकार कर चुके हैं फेलिक्स आलेमाओ। हालांकि आविष्कार मोने बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाजी की, आधे से ज़्यादा रन अकेले आविष्कार मोने ने बना दिए। इसी बीच हालांकि गेंदबाज रवि तेजा है। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी और एक विकेट का पतन यहां पे। तो बिल्कुल पतझड़ के माफिक विकेट जो है आविष्कार मोने के बाद गिरते जा रहे हैं। सिलसिला विकेट गिरने का जारी है और बिल्कुल गेम में वापस आ चुके हैं PIOC डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 इसी बीच रवि तेजा की ये गेंद यहाँ पे बिल्कुल जड़ में डाली हुई यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। बिल्कुल बढ़िया वापसी कर चुके हैं PIOC के गेंदबाज। इसी बीच अगली गेंद रवि तेजा ने अब तक एक शिकार किया है, दूसरी शिकार की तलाश में है। यहाँ पे हल्के हाथ से प्लेस करते हुए और एक रन ले लिया है। हंड्रेड एंड 94। इसी बीच रवि तेजा धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क की ओर बढ़ते हुए ये गेंद गेंदने वाले का बाहरी किनारा लिया, एक रन लेने की कोशिश वहां पे हाँ ना करते हुए रन तो ले लिया है। सुरक्षित अपने क्रीज में वापस भी पहुंच चुके हैं। तो यहां पे ओवर की समाप्ति हो चुके हैं। 17 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 195। 17 ओवर के समाप्ति के बाद 195 फॉर 6। धर्मेंद्र जडेजा और चिराग जानी ये 2 बल्लेबाज क्रीज पर है। देखना होगा बाकी के बचे 3 ओवर में और कितने रन बटोर लेते हैं। विकेट गिरने के बाद रनों की गति में अंकुश लगा है। तो अब गेंदबाजी के लिए फेलिक्स सालेमाओ पेप्सी एंड से। $196 for 6।
Desert and more Avengers. पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 196 रन बना चुके हैं। फेलिक्स सालेमाओ गेंदबाजी के लिए तैयार। पेप्सी एंड से अगली गेंद दाहिने हाथ से और 2 विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज। ये गेंद स्क्वायर की दिशा में खेल दिया है। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस रन के जरिए स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर धीरे धीरे जा पहुंचा है 197। तो बढ़िया वापसी करते हुए PIOC के गेंदबाज। हालांकि पहले उन पर बिल्कुल हमलावर थे आविष्कार मोने और आयुष वेल्लेकर। आयुष वेल्लेकर और आविष्कार मोने जाने के बाद बिल्कुल सन्नाटा है डगआउट्स में डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स के, क्योंकि विकेट लगातार गिरते जा रहे और इसका नतीजा रन जो है रन गति जो है वो कम होती हुई। वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन। 198 for 6. 18th over in progress. फेलिक्स सालेमाओ। यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन को जोड़ते हुए स्कोर 199 for 6। फेलिक्स सालेमाओ जो कि अपने निजी चौथी ओवर में चल रहे हैं, 36 रन दिए, 1 सफलता उनको मिल चुकी है। इसी बीच और 1 रन और इस रन को जोड़ते हुए स्कोर 200 रन हो चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। फेलिक्स सालेमाओ खुद कप्तान जो कि फेलिक्स सालेमाओ गेंदबाजी कर रहे हैं। और 1 रन, 201 for 6। इसी बीच अगली गेंद ये गेंद आगे आकर उठाने की कोशिश, डॉट गेंद निकाले हैं। ओवर की समाप्ति हो चुके हैं। आफ्टर 18th ओवर स्कोर 201, 201 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हालांकि आविष्कार मोने ने सभी गेंदबाजों के पीछे पड़े थे। रवि तेजा 3 ओवर 30 रन 2 विकेट। फाबिद 3 ओवर 29 रन 1 विकेट। फेलिक्स सालेमाओ 4 ओवर 38 रन 1 विकेट। योगेश कौटनकर 4 ओवर 40 रन 2 विकेट। शिवम सिंह 3 ओवर 32 रन, कोई सफलता नहीं। विवरांत जो कि 1 ओवर 18 रन, कोई सफलता नहीं। इसी बीच गेंद रवि तेजा को तेज गेंदबाजी के लिए लाया गया है। नाम में तेजा है, गेंदबाजी भी तेज करते हैं। इसी बीच अगली गेंद
यहाँ पे और एक रन मिल पाएगा, देखना होगा। फील्डर तेजी से दौड़ पड़े, चौकन्ने थे, फुर्तीले थे, तेज गति से गेंद को उन्होंने कलेक्ट किया और थ्रो कर दिया। सिर्फ एक रन। रवि तेजा फिर से अपने बॉलिंग मार्क की ओर। यहाँ पे अपने फॉलो थ्रू में जरूर रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद तेज उनके ओर आ रही थी। बिल्कुल रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए और एक रन का इजाफा होता हुआ 104 फॉर 6। बिल्कुल बढ़िया वापसी गेंदबाजों द्वारा। इसी विजय गेंद यहाँ पे क्या, और एक विकेट, जी हाँ, और एक विकेट मिल चुका है। बिल्कुल पत्तों के माफिक ये विकेट जब से आविष्कार मोने जा चुके हैं और आयुष वेल लेकर उनके विकेट गिरने के बाद ये सिलसिला लगातार विकेट गिरने का जारी है। नए बल्लेबाज आएंगे तब एक जानकारी दे दूं कि ये जो मैदान है वो कोटाली गांव में है और यहाँ से जो साड़ौली डैम है, गोवा का बड़ा डैम, बिल्कुल यहाँ से नज़दीक है, 1-2 किलोमीटर है। लेकिन जो कुर्डी गांव है, जो पूरे साल पानी में रहता है इस डैम की वजह से, वो वहाँ पे एक बेहतरीन मंदिर है सोमनाथ जी का। तो उस मंदिर में जाने के लिए अब जब पानी सूखता है तब आप जा सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल बढ़िया नज़ारा है, जो कि पूरे साल पानी में रहने के बाद जो मंदिर है वहाँ जाने के लिए रास्ता बन जाता है। वहाँ के लोगों को बहुत सालों पहले उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया था और आज भी वहाँ जो घर हैं पुराने जो घर हैं वो आज भी वैसे ही पानी सूखने के बाद दिख रहे हैं। मोगोबाई कुर्डीकर जो कि गान तपस्विनी हैं, उनका भी घर वहाँ पे है। इसी बीच फिर एक बार मैदान की ओर बढ़ते हैं। 19वीं ओवर जारी हो चुकी है। इसी बीच गेंद यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया शॉट, हवाई फायर, गेंद जा चुके हैं सीमा रेखा पार। तो बेहतरीन बल्लेबाजी, 211 रन पर स्कोर जा पहुंचा है 19 ओवर के समाप्ति के बाद। चिराग जानी बिल्कुल रन बटोर रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाए। और नए बल्लेबाज जो आए हैं हिरम परब, तो आखिरी 6 गेंदें बची हैं। तो और 11 रन आते हैं तो स्कोर 2-2 प्रोजेक्टेड स्कोर हो सकता है। ये आगे आए शिवम सिंह गेंदबाज और ये सफलता भी शिवम सिंह को मिली है। अपने व्यक्तिगत पहली सफलता शिवम सिंह के खाते में और एक विकेट का पतन हो चुका है। डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स। इसी बीच नए बल्लेबाज, हालांकि अब
यहाँ पे विकेट जो है वो मायने नहीं रखते हैं, रन आने चाहिए और उसी हिसाब से बिल्कुल हमलावर होते हुए बल्लेबाज। इसी बीच अगली गेंद, यहाँ पे 1 रन खाते में जोड़ते हुए 2-1-2। ये गेंद यहाँ पे पटकी हुई गेंद थी, कड़ा प्रहार किया और यहाँ पे रन लेना चाहते थे लेकिन 1 रन नहीं लिया गया जानबूझकर, क्योंकि बड़े शॉट खेलना चाहते हैं। बिल्कुल अपने आप को बचा लिया शिवम सिंह ने, उनके बिल्कुल सामने से तेज रफ्तार से गेंद आ रही थी, नीचे झुक गए और अपने आप को बिल्कुल बचा लिया। इस बार चिराग जानी ने फिर से यहाँ पे देखना होगा। ओ ये चौका 4 रन, इसलिए चिराग जानी ने जानबूझकर रन नहीं लिया था। उनको मालूम है कि वो बड़े शॉट खेलने जा रहे हैं, हालांकि बाकी के गेंदे भी वो खुद खेलने जा रहे हैं। इसी बीच पूरी जिम्मेदारी चिराग जानी ने अपने कंधों पर ली है। ये फिर से उठा दिया, इस बार बिल्कुल हवाई फायर करते हुए चिराग जानी अपने स्कोर कार्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हुए, गतिमान करते हुए गति दे दी है और रनों की बौछार करते हुए चिराग जानी स्कोर जा पहुंचा है 2-2-2 फॉर 8। 222 रन 8 विकेट के नुकसान पर 222 फॉर 8। दिग्गज राइकर जो कि नए बल्लेबाज, यहाँ पे 2 रन लेने की कोशिश रहेगी। 1 रन ले लिया है, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, तेजी के साथ दौड़ते हुए दूसरा रन भी पूरा कर दिया। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट और इस 2 रन के जरिए स्कोर 224 224। तो जीत के लिए जो लक्ष्य है वो 225 225 रनों का एक बड़ा लक्ष्य, बढ़िया लक्ष्य रखा है। तो देखते हैं PIOC और डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स के बीच का ये दूसरा सेमीफाइनल जो कहां तक रंग लाता है। अरसलन खान 17 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का और 2 चौके लगाए। आविष्कार मोने 107 रन बनाए, बिल्कुल 48 गेंदों का सामना किया, 7 करारी छक्के 9 चौके लगाए। ऋषिकेश उगाले जिन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया, 2 गेंदों का सामना किया। आयुष वेलेकर जिन्होंने 38 रन बनाए, 4 चौके लगाए, 34 गेंदों का सामना किया। उसमें सफल जो गेंदबाज है रवि तेजा, 4 ओवर जो कि 3 विकेट हासिल किए, 39 रन दे दिए। फाविद 1 विकेट हासिल किया, 29 रन देकर।
3 ओवर में फेलिक्स आलेमाओ 1 विकेट हासिल किया, 38 रन दिए 4 ओवर में। योगेश कौटनकर 4 ओवर 40 रन 2 सफलताएं। शिवम सिंह 4 ओवर 45 रन 1 सफलता। और विवरांत जो कि 1 ओवर 18 रन। ये हैं गेंदबाजी का विश्लेषण। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आएंगे शाम, हालांकि ब्रेक नहीं होगा, शाम खलंगुटकर। Well, we've got Avishkar Mone with us, star with the bat. Well, the team total has prospered to about 200. Talk us about your innings and this particular wicket. The wicket is playing very good. It is slightly on the slower side, getting slower by the day. So was trying to play as long as possible, because once you get in, it is easy to hit. When you are not set, it is like difficult to strike the ball. That's why I tried to play as much as possible. We saw some magical innings in Amorna. We saw something in Fonda. Was it like some starts that are converted and blasted here against the opposition today? Yeah, converting the starts is very necessary. Even the Amona inning, I think we had got 9 wickets, and now also it was crucial to play the whole inning. Prathamesh and Deepraj had to play freely as per their team plan. So that's what I did. How about the organizing of the Sangam cricketers, as this Goichi League will prosper as and all the seasons will come, and the opportunities that are provided for youngsters as well as the Goan cricketers gelling with the outstation players? Yeah, it's a very good platform. We get an opportunity to play with outstation players is very necessary. It takes the level up. We need more tournaments like this. Sangam cricketers has set the trend, and it has to spread all over Goa, I think. Yes, certainly it would. Talking about your first innings, 200 plus. Now it's up to your bowlers to back it up with some good bowling performance, as well as the fielders need to back them up, as the priority titans already had posted 236. Your guys have also posted 200. What will be the plan like to restrict the opposition under that score? So bowling to the field, and as well we can restrict them and take wickets. It's fine. It's not a problem. We should not let the game get away from us. Yes, all the very best. And that was the man of the moment, Avishkar Mone, with you.
So the target required to win for PIOS will be 230. 5 runs penalty was given to the batting team. So 229 that has been posted, and 230 will be required to win in 20 overs for Purvorim Institute of Cricket when they come out to bat. Shortly we'll be back with that run chase.
Here's Hiram and start off with a loosener. Abhinav Tejrana, along with him is Manthan Khutkar. 230 that is required for the PIOC. Hiram Parab charging in from the gateway end. Nicely played in the gap. And that's 4. Need this kind of approach from these two if they are in chance of chasing that total of 230. Foolish in lane delivery and back past the bowler for 4. This time in the air, fielder backpedaling, but won't avail anything cause that's gone for 6, half a dozen runs. Score moves to 10. Through with the shot, and that's a maximum. So first free hit that has been taken by the batting team. Short delivery in the air, chance taken but won't be given out as it was a free hit. Just a single. Straight down the throat of that fielder at square leg. Does well. Throws it back. $230 looks a stiff total, but when you got the likes of these two men and also a very deep batting lineup, if you calculate it well and you pace your innings accordingly to the situation, why don't you can chase that 230? This time chasing a wide one was Manthan Khutkar. Nicely played, straight to the bowler. Dot delivery to end the first. After completion of 1, it's 11. 11 without loss after 1. PIOC. Change in bowling from the Pepsi end. It will be Chirag Jani into the bowling attack. Played really well at the back end of the innings. Got them towards a decent enough total. What the start they got due to Avishkar Mone. Nicely played. That's driven. And driven past
Extra cover for 4. Again, making his intentions pretty clear. Abhinav Tej Rana. Booing him off drive through the covers for 4. Nicely played. Oh, is that taken? Wow, what a catch that is. Diving full length. Hand catch has been taken. Full stretch. Digesh Riker with that catch. Absolutely brilliant. And Chirag Jani has got his man. Again, nicely played, but the fielder was equally up to the task. Kept his composure, kept his eyes, and diving towards his wrong side, that is his left, and taking a brilliant catch. We saw earlier one from Shubham. This one is equally up there. 15 for 1, PIOC. Nicely played. Again, Digesh Riker does well. Looking for the second. Oh, hesitation. Yes, no, yes, no. But I have taken a couple. Gets off the mark with that couple. Score moves to 17. Second over in progress, chasing a big total, a mountain to chase. 230 in 20 overs in the semi-final 2. Shimmy down the wicket and a single taken. Vivrant has come into bat. At the start, all 3 left-handers. 2 came in as openers. Manthan Khutkar in the middle along with Vivrant. Now, yet to get at the mark, Manthan Khutkar. But once he gets going, you just need to watch him bat. Is that kind of a batsman he is. Pleasing to the eyes. The stroke play that he has in his armory is superb. Needs to get going in this innings. Very important for his team. That's up in the air. And gone. Again Riker with that catch. And Manthan Khutkar departs. He's gone without scoring. It's 18 for 2. In some spot of bother. The Porvorim Institute of Cricket.
Well, this impact of Chirag Jani has created a lot bigger impact on this game. 30 runs with the bat and now 2 wickets. Second free hit that has been taken. Another left-hander has come out to bat. And this time it's Ravi Teja. Good delivery. Telukupalli Ravi Teja has come out to bat. Dot delivery to start with. Excellent over coming to an end from Chirag Jani. Two wickets in this over. After completion of 2, it's 18 for 2. Dalal Constructions, Dattadas Bise, DJ Coconut Private Limited, and many more sponsors for this GOICHI League Season 2 2025, powered by Shri Subhash Fardesai, Minister of Social Welfare, along with the cooperation of SANGUEM cricketers. Full toss delivery, straight to the fielder. Heram continuing from the gateway end. Inside edge. Would have been gone for all money. Would have been gone onto the stumps. But not to be. Very lucky. Chasing a big total. If you start getting runs, these kind of things won't matter much to you. But certainly, at this kind of rate, they are not going to get there. 12 runs per over is the asking rate now, which has just crept up a bit. Up in the air. Fielder will watch it sail over. Just wide of him. At the mid-wicket fence. A maximum. Score moves to 24. Just that pace on the ball. And the batsmen are ready to pounce on it. Excellent batting. Vivrant with that maximum. Might be some kind of a problem with the ball. Might have just dented on the concrete. And the sheen of the ball is very necessary. This being a very historic and really good ground over the years by the SANGUEM cricketers here in Kortali. As one of my fellow commentators, the legendary Mr. Banti Udelkar, explaining just a few miles away the Salaulim Dam. (24 for 2). Short delivery, banged in, and this time up and over the field for 4. Up and over the head of Chirag Jani. Couple of steps down the ground and over the mid offside for 4.
appealing, might have just been differing down leg. Leg by is the signal given by the umpire. Have a look. Yes, definitely going down leg. Excellent umpiring. These two rated as highly top umpires in the Goan cricketing circuit. Free hit time. Third free hit. Tulukupulli Raviteja on strike for this free hit. Last delivery of this third over. Maybe some change of tactics against Raviteja by Hiram Parab. Short delivery, quick delivery outside the off stump to finish off the over. 11 runs coming from it after completion of 3. It's 29 for 2. 29 for 2 after 3 overs. Just going at under 10 runs per over. Requiring another 201 in 17 overs as far as the PIOC is concerned. Change in bowling. It will be the man of the moment, century maker, Avishkar Mone, with his off spin. Let's see if he can also create an impact with the ball. Scotted away down to deep square leg. In fact, deep mid wicket will just be one. Raviteja yet to get at the mark. What kind of tactics does he have against Avishkar Mone's spin? Full toss delivery. And down to extra cover for 1. Also would like to see how Mehang Dharwadkar comes on to bowl in this particular innings. Has been their go-to man over the competition. Oh, opportunity gone backing. Wicket keeper with that fumble. Trying to chase a wide one. A quicker delivery that time by Avishkar Mone. Keeper was not in control. Looking for the reverse. Missed it completely. Dot delivery. Umpire says that I'm not going up. That is fine. Another dot ball. Dot balls will mount pressure on the batsmen as already they are chasing total of 230. And now with this kind of steady and very gutsy kind of bowling. In the air and will clear the man. Will be standing on that hill to catch that one. All the way for half a dozen runs. Breaking the shackles, finally, Vivrant with that maximum. Score moves to 37. Again, same hit and same result. This time not big enough, but the desired result was similar.
Two maximums to end the over. After completion of 4, it's 43. 43 for 2 after 4 overs. PIOC. Change in bowling. It will be Mehang Dharwadkar in the bowling attack from the gateway end. 43 for 2. 187 more required in 16 overs as far as the PIOC are concerned. Earlier in the day, it was Priority Titans winning the game and hosting the Dempo Challengers in that semi-final one. 236 was posted, courtesy of some brilliant batting by Prathamesh Salunke and also Parth. And then Parth with those 5 wickets, completely breaking the back of Dempo Challengers. Only the talking factor in that batting of Dempo was Atharva Ankolekar with a sparkling half century. Apart from that, nobody really kicked on. The bowlers did the job, so did the fielders of Priority Titans. Sitting pretty in that final. We'll be watching this game closely. Which team meets them tomorrow at 2:30. Grand finale of the GOICHI League Season 2. Physio was on just to tape up things. .43 for 2 after 4. Here's Mehang Dharwadkar. Has he been strangled down the leg side? Appealing, begging for it. Not given. Looks like it just bounced on the surface and then went into the keeper's hands. No, it just brushed the back leg of the batsman. Excellent decision. Nicely worked. Down to deep backward square. Will just be a single. Again, nicely bowled and nicely played as well. The man at backward square has been kept busy.
Full toss delivery and worked along nicely. Again for a single. Maybe just trying to know what kind of line is Mehang Dharwadkar bowling to them, and maybe then try and accelerate as the game progresses. 230 looks very far from here on, but if you have a solid partnership in the middle, you can certainly chase it down. Again, nicely played. Again, easily got a single, bit of fumble, but won't be risking anything. Single taken, score moves to 47. Talking about the early innings of Desert and More Avengers, they also lost 2 wickets earlier on, 20 for 2, and then a mammoth partnership between Vellekar and Mone to take them towards this kind of mountain. This one that has been blasted along the carpet down to deep square. Will just be one to end the over. After completion of 5, it's 48 for 2. 48 for 2 after 5. Vivrant along with Telukapalli Raviteja in the middle. After completion of 5 overs, 48 for 2. Requiring another 182 in 15 overs. Will be change in voice. It will be the legendary Bunty Vadilkar in the commentary box. जी विजय गेंद यहाँ पे बिल्कुल देखना होगा। जी हाँ, ये बल्लेबाज तो वेट कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने आउट करार दे दिया है और 1 विकेट का पतन, तीसरी विकेट का पतन हो चुका है। तो बिल्कुल एक बड़ा लक्ष्य जो रखा है 230 रनों का, डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स बिल्कुल इस मैच पर अपना दबाव बना बैठे हैं। PIOC पिछड़ रहे हैं, हालांकि उनके विकेट गिरते जा रहे हैं। दीपराज, इन्होंने ये बेहतरीन कैच लपक लिया। एक जाने माने ऑलराउंडर हैं दीपराज गांवकर, काफ़ी सालों से सीजन बॉल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। गोवा के भी लिए उनका योगदान अहम और काफ़ी तजुर्बा है उनके पास। इसी बीच तीसरी विकेट का पतन हो चुका है। जब तक एक बड़ी साझेदारी न बन जाए तब तक सुकून महसूस नहीं कर पाएंगे PIOC। तो उनको यहाँ पे साझेदारी की जरूरत है, जैसी साझेदारी आविष्कार मोने और वेल्ले करने की है। इसी बीच आविष्कार मोने एक शिकार कर चुके हैं, दूसरी शिकार की तलाश में। पहले बल्लेबाजी में करिश्मा दिखाया आविष्कार मोने ने, अब गेंदबाजी में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। यहां पे अपने फ्लो थ्रू में इस गेंद को रोकने की कोशिश की, बैकअप था वहां पे। 1 रन, इस रन के जरिए स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभिनव और मंथन इसे भी अगेन इनसाइड आउट खेल दिया, 1 रन। तो अभिनव और मंथन जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभिनव ने 15 रन बनाए, मंथन ने बिना खाता खोले डगआउट में चलते बने। और
रवि तेजा जो कि 4 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। विभ्रांत और शुभम ये 2 बल्लेबाज क्रीज पर हैं। शुभम देसाई ये उठा दिया है, क्या सही टाइमिंग मिल चुका है। ओ वहां पे देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। और ये 6 रन अंपायर ने अपनी बाहें जो है वो आसमान की ओर की है, तो 6 रनों का इशारा, इस 6 रन के जरिए स्कोर गतिमान होता हुआ। हालांकि मौका था फील्डर के पास कैच लपकने का, लेकिन नाकामयाब रहे। स्कोर 56 फॉर 3। दूसरा सेमीफाइनल यहां पे चल रहा है, जो कि कल ठीक 1:30 बजे 1:30 PM शार्प, और यहां पे अंपायर का इशारा चौका, 4 रन्स। इसी बीच कवर की दिशा में खेल दिया, बढ़िया फील्डिंग है यहां पे। इस रन को जोड़ते हुए 55 फॉर 3। 6 ओवर के समाप्ति के बाद 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो जो रन औसत है उसे बढ़ाने के चक्कर में 3 विकेट गिर चुके हैं। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद महंक धारवाड़कर पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। तेज रफ्तार की गेंद, वाइड बॉल का इशारा आ सकता है। जी हां, वाइड बॉल का इशारा। स्कोर 56 रन 56। शुभम देसाई और विभ्रांत, हालांकि विभ्रांत एक छोर से बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 गेंदों का सामना किया, 29 रन अब तक बनाए हैं। आविष्कार मोनी जैसी पारी खेलनी होगी विभ्रांत को। यहां पे सिर्फ 1 रन मिलेगा। इस 1 रन को जोड़ते हुए स्कोर 57 रन पर जा पहुंचा है। 57, हालांकि 58। इसी बीच ये गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद, अपील की थी लेकिन उसमें हौसला ज्यादा था, आत्मविश्वास कम था। सेफ है बल्लेबाज। इसी बीच ये गेंद उठा दिया है, देखना होगा वहां पे फील्डर। ओ वहां पे थोड़ी सी उनके आगे ये गेंद गिरी। बिल्कुल प्रयास करने के नजदीक पहुंचे थे, लेकिन आखिरकार इरादा बदल दिया, गेंद रोकने के लिए गए, वरना ये चौका जा सकता था।
58 for 3, 7th over in progress. ये उठा दिया है, ये यकीनन हवाई फायर हो सकता है, इंतजार करें अंपायर का। जी हाँ, ये 6 रन तो बिल्कुल हवाई यात्रा पे गेंद निकली है 6 रन के लिए। बिल्कुल घुटना टेक शॉट था, घुटने के बल पर इस शॉट को खेल दिया 6 रन के लिए। यहां पे आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेल दिया है 1 रन के लिए। इस 1 रन को जोड़ते हुए स्कोर 65 रन पर जा पहुंचा है। अभी काफी लंबा फासला तय करना होगा। 9.51 ये रन औसत है और चाहिए जीतने के लिए 12-13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन अब आगे बनाने पड़ेंगे। इसी बीच गेंद, ये गेंद गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर और ये चौका मिलेगा। जी हाँ, 4 रन्स इसे कहते हैं, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। 69 for 3, 7 ओवर के समाप्ति के बाद विवरांत बिल्कुल बढ़िया खेल रहे हैं। अपने बल्ले से धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए विवरांत 18 गेंदों का सामना करते हुए 34 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे हैं। टीम का स्कोर है 69 रन, 69, यानी आधे रन तो अकेले विवरांत ने बनाए हैं। उनको बड़ी लंबी पारी खेलनी होगी, आखिरी गेंद तक पिच पर टिके रहना होगा। इसी बीच यहां पे सिर्फ 1 रन। आविष्कार मोने जो कि एक जाने माने ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी में तो करिश्मा कर चुके हैं, अब गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, एक सफलता अर्जित कर चुके हैं। स्विच खेलने की कोशिश वहां पे नाकामयाब रहे। आविष्कार मोने भी चौकन्ने थे, उन्होंने देखा कि स्विच खेलने की तैयारी चल रही है। इसी बीच फिर एक बार ये फुल टॉस गेंद थी, देखना होगा वहां पे, अरे आउट। चौथी विकेट का पतन हो चुका है, बिल्कुल कमर तोड़ दी है। PIOC को अब किसी भी हालत में एक बड़ी साझेदारी तो करनी ही पड़ेगी, इस मैच को जीतना है तो। इसी बीच बिल्कुल झटके पे झटके खाते जा रहे हैं और डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स ने इस मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना ली है। इसमें आविष्कार मोने बिल्कुल आगे चल रहे हैं, बढ़िया शतक जड़ दिया। इसके अलावा अब गेंदबाजी में दूसरा विकेट हासिल किया है। 4 में से 2 विकेट आविष्कार मोने के खाते में। तीसरी ओवर जारी है, सिर्फ 22 रन दे दिए हैं आविष्कार मोने ने। आज तो दिन आविष्कार मोने का बनता है। देखते हैं नए बल्लेबाज फाबिद आए हैं, शिवम देसाई का साथ निभाने के लिए। इन दोनों को अब लंबी पारी, लंबी साझेदारी करनी पड़ेगी।
तेज रन बनाने होंगे, विकेट भी बचाकर खेलना होगा। लेकिन डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स के गेंदबाज उनको मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल अंकुश लगाया है रनों पर विकेट गिरने के कारण, तो उसमें से उभर नहीं पा रहे हैं। तो इन दोनों को अपने टीम के लिए उभारना होगा। जब इक्का दुक्का मिलता है तो इक्का दुक्का मौका मिलता है तो चौका, लेकिन स्कोर बोर्ड जो है वो बढ़ता ही रहेगा तो ही, और विकेट भी टिक कर खेलने होंगे। पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। दूसरा रन लेना चाहते थे, ऐन वक्त पर अपना इरादा बदल दिया। शुभम देसाई और फाबिद की ये जोड़ी क्या जमती है वो देखना होगा। आठ ओवर के समाप्ति के बाद 73 फॉर 4 रन औसत जो है, आस्किंग रन रेट बढ़ता ही जा रहा है, 13 के ऊपर जा पहुंचा है। इसी बीच अगली गेंद, $230 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया है, अंबार लगाया है रनों का, और उसका पीछा करते हुए 8 ओवर के समाप्ति के बाद 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां पे 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। हेरम वहां पे फील्डर थे और दूसरा रन भी पूरा कर दिया। इस 2 रन के जरिए स्कोर 75 फॉर 4। केट पेंटो जो कि अपने पहली ओवर की अगली गेंद, ये उठा दिया है, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और 1 विकेट का पतन हो चुका है। आधी टीम जो है PIOC की डगआउट्स में वापस जा चुके हैं। बिल्कुल इस मैच पर अपना कब्जा बनाते हुए डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स बिल्कुल जीत की ओर अग्रसर हैं। देखना होगा बाकी के बच्चे बल्लेबाज PIOC के क्या पासा पलट पाएंगे। हालांकि अभी बहुत मौका बाकी है, सिर्फ विकेट पर टिके रहना होगा और बल्लेबाजी भी तेज करनी होगी। बिल्कुल कैचिस बढ़िया तरीके से पकड़ रहे हैं और कहते हैं कि कैचिस विंस द मैचिस। बल्लेबाज को अगर मौका मिलता है, जीवनदान मिलता है तो वो फायदा पहुंचाते हैं। अगर लेकिन अच्छी तरह से कैचेस लेते हैं तो बिल्कुल गेंदबाज के लिए मनोबल जो है वो बढ़ता है। नए बल्लेबाज वासु तिवारी भी बढ़िया खेलते हैं। उनको भी यहां पर अगर अपने टीम को फाइनल में लेके जाना है तो बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये गेंद और ये बाउंड्री लाइन की ओर जा रहे हैं गेंद, ये मिलेगा फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका, 4 रन्स। वासु तिवारी ने
आते ही अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। बुलंद इरादों के साथ मैदान में आ चुके हैं वासु तिवारी। यहां पे एक ही रन मिलेगा। इस एक रन को जोड़ते हुए स्कोर 80 रन पर जा पहुंचा, 80 for 5। जब विकेट गिरता है तो रन औसत पर बिल्कुल जो है अंकुश लगता है। यहाँ पे कट के आए, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, चौका मिलेगा। 4 runs, 84 for 5। (84 for 5) 9 ओवर के समाप्ति के बाद इसका सीधा प्रसारण जो है गोवा लाइव कास्ट के जरिए आप YouTube पर देख पाएंगे। गोइची लीग टाइप कीजिएगा, गोवा लाइव कास्ट, और इसका सीधा प्रसारण आप अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। बहुत सारे दर्शक इस मैच को देख रहे हैं क्योंकि सीजन बॉल जो क्रिकेट होता है इसके दर्शक जो हैं वो अलग होते हैं। कहाँ भी मैच हो ये दर्शक वहाँ पहुँच जाते हैं। सीजन बॉल क्रिकेट प्रेमी ज़्यादातर टेनिस नहीं देखना पसंद करते, लेकिन सीजन बॉल जरूर देखना पसंद करते हैं। इसी बीच अगली गेंद, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया। 1 रन, 85 for 5। पचासी रन। ये गेंद यहां पे अपने फॉलो थ्रू में बिल्कुल बढ़िया प्रयास किया था, लेकिन लपकने में नाकाम रहे। तेज रफ्तार के साथ गेंद उनकी ओर आ रही थी, गेंदबाज की ओर गोली की रफ्तार से आ रही थी, फिर भी अपना हाथ आगे किया लेकिन पहुंच नहीं पाए। यहाँ पे 1 रन तो मिलेगा। दूसरा रन क्या लेना चाहेंगे? नहीं, दूसरा रन लेने से एक दूसरे ने दोनों को मना कर दिया, वरना खतरनाक साबित हो सकता था। शुभम देसाई और वासु तिवारी यहाँ पे बिल्कुल जी जान से अपने आप को झोंकते हुए ये रन आउट होने का अपील जरूर किया था, और अंपायर ने टीवी अंपायर की ओर इशारा किया है। तो देखते हैं क्या बल्लेबाज सुरक्षित है या नहीं। अंपायर देख रहे हैं टीवी रिप्ले में। जो अभी अभी YouTube में हमारे व्यूअर्स ज्वाइन हुए उनके लिए जानकारी, ये दूसरा सेमीफाइनल मैच डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स और
PIOC के बीच चल रहा है। डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रनों का लक्ष्य रखा है और उसका पीछा करते हुए अब तक 5 विकेट गिर चुके हैं और यह भी जो खेल रुका हुआ है वो टीवी एम्पायर की ओर इशारा किया गया है कि ये रन आउट है या नहीं, तो तहकीकात जारी है। शुभम देसाई और वासु तिवारी फिलहाल सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे। बढ़िया फील्डिंग, वहां पे अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया, फिर उठकर सीधा थ्रो कर दिया। यहाँ पे और एक रन, इस रन को जोड़ते हुए स्कोर में इजाफा हो चुका है। $89 for 5। ये स्विच खेल दिया है, देखना होगा गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है और ये यकीनन 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। बिल्कुल फायदेमंद साबित होंगे ये 4 रन। 10 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 93 for 5। तो अगले 5 ओवर के लिए मेरे साथी कमेंटेटर जो कि आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं, श्याम कलंगुटकर। Thank you, Bunty sir. 93 for 5 after 10 overs. 137 required to win. I'll be change in bowling. It will be Dharmendra Singh Jadeja in the bowling attack. And this being the golden over. That's huge. Down on one knee. And over the mid-wicket fence for a maximum. So Shubham Desai making his intentions pretty clear. You need to maximize in this particular over. You get 10, 10 more will be added. You get 20, it will all become to 40. So that's kind of a play and fun is in this particular golden over. But if you are dismissed, you need to head back in the pavilion. That can't be changed. Score moves on to 99. Full toss delivery, nicely played. Down to extra cover. And with that 100 up for the PIOC. 7 runs of 2 deliveries. Nicely swept. Straight to the fielder. Chance of run out. Oh, direct hit. I suppose that is gone. Or is it reached? We'll have a look. The third umpire has been referred to. This will be touch and go. Naked eye, it looks out as looked like it hit the stumps on the flash. We'll have a look. No, he has not. Live images that have been provided to you by Goa Livecast. I thought he was struggling, but no. That is not out. Green signal by the umpire as he didn't collect the ball cleanly.
Single taken. Score moves to 101. 8 runs of 3 deliveries that have been scored so far in this golden over. Outside edge. Chance again. This time much wide. Is he going to come back for the second? Yes, he will. Not collecting the ball. And that will be 2 more. Nicely played. Is he going to come back for the second? No, just settling for 1 on that occasion. 11 runs of 5 deliveries. Nicely played. And we'll get a single on the final delivery of this golden over. So 12 runs coming from it. It will become 24. 93 plus 24, which will become 117 will be the total after 11 overs. 117 for 5. After that, over. Yes, after adding the score, 117 for 5. 9 more overs remaining. Keith Pinto from the Pepsi end. Appealing. Strong appeal, but denied by the umpire. Looks as if it pitched outside. Yeah, going down leg. Free hit taken. Fourth free hit taken. Shimmy, and that will be wide. So the free hit will continue. Oh, straight at him. That one will sting. Quickly towards him. And the batsman looks like he needs a different bat. Vasu Tiwari. That one was drilled to Keith. Maybe some maximums in this bat of Vasu Tiwari. 118 for 5. Halt of play in the middle. So that opportunity for us to read out the sponsors. GOICHI League 2025, organized by the SANGUEM cricketers, powered by Shri Subhash Desai, Minister for Social Welfare. Here are the sponsors: Desert and More, Priority Constructions, Nilesh Kabral, MLA Kurchurim, Rajesh Desai, MLA Kumbarzua, HDFC Bank, Deepak, aka Amarnath Desai, Santosh Desai, Prasad Naik, aka Pochu,
Abhijit Desai, Goa Sponge and Power Limited, JSW Cement, Vijay Farms, Shraddha Ispet Private Limited. Nicely played down the ground and will get a single. Queres Cruz, Hashish Karmalkar, Meher Khan, Rizmak Group, Raviraja Upadhyay, Sudesh Salilkar, Chimek Projects Private Limited. Nicely flicked. Again, this time on the onside. Will pick up a single. Shubham Desai. A big thank you to Goa Cricket Association and all the office bearers for their support. Oh, shimmy down the wicket, no connection, dot delivery. Then the best batsman has been sponsored by Shri Dattadas Abhise. Best bowler by Mr. Lakshman, aka Pramod Naik. Man of the final by Shri Gurunath Naik, proprietor, Dego Enterprises. Man of the series by Raghunath Moraskar, proprietor, Madira Center. Full face of the blade and will pick up a single. Runners-up trophy sponsored by Shri Ankush Gauss in loving memory of his late father Prakash Gauss. Winners trophy by Advocate Tushar Karmalkar in loving memory of his father late Vinayak D.S. Karmalkar. A big thank you to all the sponsors from the SANGUEM cricketers. It's 121 after completion of 12. Nicely played. And just flicked around the corner for Ravindra Singh Jadeja. Leading edge. And taken, lobbed in the air. Trying to just close the face on that one. Leading edge and gone. Guess that the delivery from Dharmendra Jadeja. Nicely pivot. Trying to work it on the onside and Shubham Desai giving a straightforward chance. The fielder closing in from the covers. He's also gone. It's 121 for 6. Shubham Desai dismissed for 29. Yogesh Kotankar, the new man in, guides the ball down and will pick up a single.
Nicely bowled again. Nicely played. This time, backward square, backward point. Another single. So far has been pretty tidy down the ground. Straight to the man at extra cover. Will pick up a single. Just the 3 runs coming from it after completion of 13. It's 124 for 6. 124 for 6. After completion of 13 overs. 106 more required to win in 42 deliveries for PIOS. What innings that was from Avishkar Mone. 100 runs that he scored. Quick fire 100, which propelled his team to 229. And also some late blemish from Chirag Jani. Keith will continue. Nicely played. Looking for a single. Send back. Just trying to touch it and run, which is not easy at the moment. No matter they are defending a big total, but the standards in the field have been excellent. Top-notch standards set by the Desert and Mo. Again, a chance at the bowler's end. Direct hit. They're claiming it. Keith is saying that that's gone. Seems like it. Let's see. The third umpire will be in action soon. This will be touch and go. And the red signal comes. That's gone. That's out. Excellent throw. Just trying to play it neatly. And the fielder who was closing in from the cover. And it is Jadeja with that throw. Maybe some descendancy to Ravindra Singh Jadeja. Yes, he's nodding his head. Exactly like him with that rocket throw onto the stumps. New man in Harshad Gadekar. 7 wickets down of the PIOS. 124 for 7. The momentum completely shifted when Avishkar Mone was batting, and then some terrific bit of bowling by the bowlers. Down the ground. And will find runs, will find boundary. Straight hit over the bowler's head for a boundary. This being the 13th over in progress. This being the 14th over in progress.
Edged away and gone. Another wicket. Vasu Tiwari also departs. Scientist is also here with us. 122 for 8. Cut away and taken. Excellent catch coming forward. And Keith Pinto picking up yet another wicket. New man in Shivam Singh. Nicely bowled again. Trying to target the stumps right now. Swap that one. Will get at the mark with that single. Shivam Singh. Score moves to 128. 29 for 8. 129 for 8 after 14 overs. PIOS. Still trailing by 101. 101 is required to them in 6 overs with 2 wickets in hand. Start the batting power play. And again, Jadeja has been given the ball. Dharmendra Singh Jadeja. Shivam will be on strike. 129 for 8. Well, both these semi-finals are one-sided affairs. Earlier in the day, Priority Titans completely dominating the tempo challengers, and now bossing this game completely. And Desert and Mo Avengers. Good delivery and straight to the bowler in his own follow through. Dot delivery. This one straight to the fielder again. Another dot ball. Just that the pressure has been mounted by all the bowlers of Desert and Mo. Advancing down the wicket. This time down to deep mid wicket. By the time the fielder comes in and throws it back. Single taken. Outside edge and will get a single to get the mark for Harshad Gadekar. Oh, very well bowled, right in the block hole. Searching for that wicket is the Dharmendra Jadeja. Has been very economical
This time down to deep mid wicket again. Will just be one. Single to end the over after completion of 15 overs. It's 132 for 8. 132 for 8 after 15 overs. 98 more required to win in 6 overs. In fact, 5 overs. Will be change in voice. It will be Vanti Vadelkar in the commentary box. धन्यवाद श्याम कलंगुटकर। फिलहाल डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स ने पूरी तरह से अपने मैच कब्जे में ले लिया है। यहाँ पे रन लेने की कोशिश और ये आउट। तो 9वीं विकेट का पतन हो चुका है। बिल्कुल पहले से ही डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स ने कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को, जो कि 230 रनों का जो लक्ष्य था उस तक पहुंचने के लिए बिल्कुल विकेट लेते रह गए। तो जो अभी आखिरी विकेट बची है उनके लिए एक ही मौका बनता है कि आपको हर गेंद के लिए पीछे पड़ना होगा। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल घनी, क्योंकि आस्किंग रन रेट जो है 20 रन जा पहुंची है। तो आपको अभी बिल्कुल हर गेंद के पीछे पड़ना होगा। गोवा लाइव के काश के निखिल डांगी काफी दिनों के बाद आए हैं, जो कि ओनर हैं गोवा लाइव कास्ट। इसी विजय गेंद यहाँ पे प्रयास तो किया था, ये गेंद यहाँ पे इसी बीच अब तो इक्के दुक्के से नहीं चलेगा। सिर्फ आप जीत का अंतर जो है वो कम कर सकते हैं। इसी विजय गेंद नए बल्लेबाज जो आखिरी बल्लेबाज हैं फेलिक्स आलेमा आए हैं। हर्षद गड़ेकर और फेलिक्स आलेमाओ ये आखिरी जोड़ी मैदान पर है PIOC की। बढ़िया गेंदबाजी पिंटो बिल्कुल इस ओवर में पहली गेंद पर 1 विकेट ले चुके हैं। दूसरी गेंद डॉट, तीसरा 1 रन, चौथी पर 1 रन, फिर डॉट और अब ये गेंद यहाँ पे अपील तो की है और ये टीवी अंपायर की ओर इशारा किया है। शायद जो फील्डर्स है, कीपर हैं, उनको मालूम है कि ये बिल्कुल क्रीज के बाहर थे। तो देखते हैं टीवी अंपायर का इशारा क्या आता है। क्या लाल लाइट जलती है या हरी लाइट? अंपायर जो कि टीवी अंपायर तहकीकात उनकी जारी हैं।
और इसी बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 16 ओवर के समाप्ति के बाद 134 फॉर 9। पिंटो जो कि 4 ओवर में 22 रन देकर 3 सफलताएं अर्जित की हैं। बिल्कुल जो विकेट का सिलसिला है गिरने का, 15 रन पर पहली विकेट, 18 रन पर दूसरी विकेट, तीसरी विकेट 48 रन पर, चौथी विकेट 70 रन पर गिरी, पांचवी विकेट 75 रन पर, छठवीं विकेट 121 पर, सातवीं विकेट 124 पर, आठवीं विकेट 128 पर, नौवीं विकेट 132 पर। ये बिल्कुल रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिरते गए। यहाँ पे हर एक रन का इजाफा। अगर सीधा थ्रो स्टंप पे लगता तो ये बिल्कुल करीबी मामला हो सकता था। फिलहाल सुरक्षित 17 रन, 17वीं ओवर जारी है और स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 135 फॉर 9। हालांकि जो बल्लेबाज हैं विवरान 34, शुभम देसाई 29, वासु तिवारी 25। इनके अलावा कोई बल्लेबाज वहां पर टिक नहीं पाया। आड़े बैट से उठाने की कोशिश नाकामयाब रहे। 17th ओवर इन प्रोग्रेस। तो बिल्कुल दरवाजा खुल चुका है फाइनल का डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स के लिए। सिर्फ इंतजार है आखिरी गेंद का। जब तक आखिरी गेंद डाली न जाए तब तक जो दरवाजा खुला है वो खुला ही रहेगा। डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स आखिरी गेंद के बाद ही एंटर कर सकते हैं। प्रायोरिटी टाइटंस इंतजार कर रहे हैं फाइनल में। ये उठा दिया है। ऐसे ही लगातार छक्के पे छक्के जड़ने होंगे। फिलहाल एक हो चुका है। ओवर की समाप्ति। तो देखते हैं बचे हुए 18 गेंदों में 89 रन चाहिए। 18 balls and 89 to win। तो छक्कों और चौकों की बौछार हर गेंद के पीछे पड़ना होगा तो ही आपकी आशाएं जग सकती हैं। इसी बीच यहाँ पे थर्डमैन की दिशा में खेल दिया है। हल्के हाथ से गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। यकीनन चौका मिलेगा। जी हाँ, 4 रन्स।
145. ये गेंद कवर की दिशा में खेल दिया, वहां पे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर रोक दिए गए। इसी बीच अब तो आस्किंग रन रेट जो है 30 के ऊपर जा पहुंची है, तो बिल्कुल ये उठा दिया है, देखना होगा वहां पे, नहीं थोड़ी सी शॉर्ट गिरी। बिल्कुल अब ये लक्ष्य जो है पहुंच से बाहर, यहाँ पे 6 रन यकीनन मिल जाएंगे। हवाई फायर कर दिया है, इस 6 रन के जरिए थोड़ा सा सुकून मिलता हुआ, और जो जीत का लक्ष्य है उसे और 6 रनों से कम करते हुए। कलाई के जरिए मोड़ दिया और 1 रन। तो अब 12 गेंदें बची हैं, 76 रन चाहिए, यानी 12 गेंदों में 12 छक्के, तो भी तो देखना होगा 12 गेंदों में कितने छक्के आते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सिर्फ औपचारिकता है इस मैच में बाकी हैं। फील्ड में बदलाव करते हुए यहाँ पे और 1 रन। इसी बीच चिराग जानी, तो आखिरी विकेट की जो साझेदारी है बिल्कुल विकेट नहीं दे रहे हैं गेंदबाजों को, फेलिक्स आलेमाव और हर्षद गड़ेकर। बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे थे, जो कि डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स, उस जीत का जो फासला है बड़ी जीत का उसे कम करते हुए ये आखिरी विकेट हर्षित गड़ेकर और फेलिक्स आलेमाव। जब तक आखिरी गेंद आ जाए तब तक ये उठाने की कोशिश, अपील भी जोरदार तरीके से हुई है, लेकिन सिर्फ गेंदबाज ने अपील की, कीपर ने आराम से इस गेंद को कलेक्ट किया, वापस कर दिया बॉलर के लिए। पटकी हुई गेंद थी, (156)
यहाँ पे कलाई का उपयोग, एक ही रन मिलेगा। 157। तो देखना है डेजर्ट एंड मोर कितने रनों से इस सेमीफाइनल को जीत पाती हैं। फिलहाल तो 73 रन बनाने हैं और 8 गेंदें बाकी हैं। हालांकि जीत तो कंफर्म है डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स की, लेकिन कितने रनों से जीतती हैं यही देखना पड़ेगा अब। जो दर्शक हैं अब अंदाजा लगाएगा कि कितने रनों से जीतेगी। फिलहाल तो और 72 रनों की दरकार है। ये कीपर ने प्रयास तो बढ़िया किया था, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा चुकी है। तब फासला जो है वो और कम होता हुआ 68 रन चाहिए, 68। तो दर्शक जो है आप अनुमान लगाएगा कि क्या आखिरी गेंद से पहले ऑल आउट हो जाएंगे या 6 गेंदों में और कितने रन आएंगे और कितने रनों से जीत पाएंगे। गजा मसूरकर उन्होंने अंदाजा लगाया है कि 65 रनों का लक्ष्य जो होते हुए जीत पाएंगे। तो देखते हैं, 1 रन तो हो चुका है। तो देखते हैं गजा, ये दूसरा रन। तो जीत के लिए अब 66। गजा मसूरकर ने कहा है कि 65 रनों से जीतेंगे। ये उठा दिया है और ये बहुत ही बढ़िया। गजा मसूरकर ने अंदाजा लगाया था कि 3 रन बना लेंगे और वही हुआ। एस्ट्रोलॉजर गजा मसूरकर। तो बिल्कुल अब फाइनल जो होने जा रहा है कल ठीक 1:30 बजे 1:30 PM संडे को इसी मैदान पर, वो प्रायोरिटी टाइटन और डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स के बीच फाइनल मैच होने जा रहे हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं माइक श्याम कलंगुटकर को सौंपना चाहूंगा। ओवर टू श्याम कलंगुटकर। Requesting both the captains if they can please come towards the presentation arena to have a quick chat.
and also the man of the match awardee. Also requesting the captain of PIOC, if you can have a quick word with me. Felix, tough luck. 200 is a massive total to chase down, but the batting that you guys have got, you certainly would have done better. Yeah, definitely 200, 230 was on the higher side. But keeping in mind the uniqueness of this tournament, yeah, it is quite achievable with the batsmen we have. So Avishkar Mone, hats off to him. It was a very wonderful innings. It took the game away from us. And I think they outclassed us in all the three departments. They were outstanding catches on their side, good bowling and batting. Yes, they all outplayed us in this match. Well, this was an important game, semi-final too, but let's not focus on that semi-final too. Let's take what positives that you are taking out from this tournament in the near future. Yeah, there are many boys who come up with performances, and these experiences, you learn from these experiences, and then you try to become a better cricketer. So I think many guys from our team have learned our lessons through this experience, and hopefully next time when we get on the field, we are much matured cricketers. Personal point of view, how is the body supporting, and will we see Felix Valemau firing with all cylinders in future tournaments? Yeah, definitely. Yeah, a bit tired because there have been a lot of matches in the backdrop of this tournament. There's another one coming up. Yeah, but as professionals, you have to take care of yourselves. You have to be responsible about your body. And yeah, we'll definitely want to bowl much quicker. Last thing about the organizing of the Sangam cricketers in this GOICHI League. Yeah, this is a great tournament. All cricketers in Goa look forward to participate in this tournament, especially the organizers doing a wonderful job because it's seen on the YouTube. There are a lot of viewers on the YouTube, and the uniqueness of this tournament. So that's what brings the excitement, and we are all players excited to be part of this tournament. And a big thank you for the organizers to putting up a great show here and giving us this opportunity to showcase our skills. Yeah. Thank you, and all the best for the near future. Quickly, if I could ask Deepraj Gaonkar, if he can please step up and have a word with me. Clinical performance with the bat, with the ball in the field. 200 far total to chase down for the opposition team. Yeah, it was a good batting performance from Avishkar Mone. The way he batted, it was brilliant to watch, and he brought us in the comfortable position to defend the total. Stronger position. What positives are you taking in for the finale tomorrow against the Priority Titans? Yeah, there are lots of positive, especially in the batting department. The way Avishkar is playing is really good to watch, and especially in the bowling department, the way bowlers are executing their plan is pretty good. One word about Mr. Jadeja. Electric in the field and also economical with the ball. Yeah, he came as a replacement for Tanush Kotia, and he performed really well. And as a professional, he has to do what he's doing, and he's brilliant in his field. All the best for the finale. Thank you. We'll have the man of the match now, and one word for that man. Brilliant. Avishkar Mone, if you can please come and collect your man of the match trophy from Mr. Nikhil Dange, proprietor of the
Goa live cast. Avishkar Mone, come quickly. Brilliant batting performance, 100 as well as 2 wickets, 7 maximums and 9 boundaries, completely decimating the opposition with his batting. Continued with the same kind of tempo in the entire innings. We'll have a chat with Avishkar. Avishkar, well batted. Brilliant batting performance. We chatted earlier. How about the bowling as well and the positives that you are taking in for tomorrow's final? Any specific plans for tomorrow's grand finale? Nothing we have discussed. We have not discussed it yet, but we need to give 100% tomorrow to win the game. Priority is a good side, so we have to plan and get them out. Well, they put on 200. You guys put on 200. Will we see to get 300 tomorrow from you two? I think we should happy with what we have now, but let's see tomorrow's situation tomorrow. Yes, thank you very much. And that was the man of the match, Avishkar Mone, for his brilliant batting and bowling.